Today we are going to discuss about industrial safety, and this video recording is specifically available from the live training program which is conducted at MIDC companies for electrical safety, and this safety training program is conducted for workers, supervisors and engineers of the electrical machine or electrical motor manufacturing company. In this video, we will see how important the electrical safety is as well as the safety related with the fire hazards. Let's begin. से बचने के लिए आपके पास एक दिन का भी समय नहीं। We are not having a single day to prevent the all miseries from the accident. आपके पास पूरी लाइफ है। सिर्फ एक दिन में आप उस एक्सीडेंट के जो इफेक्ट्स है उसको नहीं रोक सकते। आप एक्सीडेंट का जो नतीजा होने वाला है उससे आप नहीं बच सकते। आपको हर पल सेफ्टी का साथ देना होगा। हर पल आपको सेफ्टी के लिए फॉलो करना होगा। शायद आप उसके विक्टिम ना बनो, आपको इंजरी ना हो, पर आप उसका जरिया बन सकते हैं। किसी और को समझा के इस तरह से काम मत करो, इस तरह से करो, या फिर आप खुद से शुरुआत करो। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा दिन था जब अर्थक्वेक हुआ और पूरा सिटी डिमोलिश हो गया। और उस दिन के एक दिन पहले कुछ भी लोगों को पता नहीं था कि कल ऐसा होने वाला है। क्या आपको पता है कि कल यहाँ पे कुछ होगा? क्या 25/11 को पता था कि 26/11 को कुछ होगा मुंबई में? तो ये एक्सीडेंट, ये इंसिडेंट्स, ये सब अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हमें हर पल सतर्क रहना चाहिए। तो इसके ही टॉपिक के अनुसार ये वीडियो है। तो सिर्फ क्या करना, न्यूज़पेपर रीडिंग की जगह पे टैबलेट आ गया, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, लैपटॉप, टीवी की जगह पे लैपटॉप, अदर डिवाइसेस आ गए। तो क्या हुआ? अक्टूबर 17, 1989, the day just heated by the earthquake। और उसके पहले एक दिन दोनों का ऐसे ही है, जैसे क्या, just ordinary day, like today। Just read it and you will know what I wanted to tell you। कि वो दिन भी वैसे ही था जैसे आज का दिन गया, but उस दिन के next day there was a big earthquake। So it is not in your hand, it is not in your control। Similarly, the accident in a factory is not in your control, but the reason starts with you। We have to take more precautions, we have to take more care about our accident prevention plan, that is nothing but the safety। तो अभी हम लोग चालू करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में फर्स्ट पॉइंट है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। ओके,
first thing, most important, there are two types of supply. दो तरह के power supply available है. एक है आपका high voltage high level voltage high voltage level और second है low voltage level.